A very good afternoon to everyone. I welcome you all in this fantastic course. I welcome you all to the Ekatvam Academy. Of course, now that you have already decided that you have to do the CA course, मुझे ये पूछना चाहिए था एक्चुअली कि आपको किसने कहा कि आपने CA करना चाहिए, क्यों आपको लगता है कि आपने CA बनना चाहिए? ये जनरली मैं पूछता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को चिढ़ाने में। But at the same time, now you have already decided, you have already paid the fees. आज मैं कुछ बातें बताऊं आपको और उसके बाद में जैसा मेरा लेक्चर खत्म हो उसके बाद में अचानक आप पूछने लगो सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द कोर्स, इसके बजाय I'll directly go into what is required for this course. Of course, you have already heard something from Sucharit sir, you have already met SM sir. They have already been mentioning something about this course. They must have mentioned about this course. They must have told you that what are the requirements of this course and how we are supposed to study. मेरा फोकस रहेगा कि हम इस कोर्स के पूरे स्ट्रक्चर को जान लें। इस कोर्स में हमें किस तरह से पेपर्स लिखने होंगे, उन पेपर्स को हम लोग कैसे पास करेंगे, what is the criteria required for passing, what are the various stages of this course. क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है पर कौन सी इंफॉर्मेशन सही कौन सी इंफॉर्मेशन गलत, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। बाय द वे, आई एम Jadeja. I will be taking the subject of accounts along with CA Abhishek Zavre. We both share this subject, we both deal with this subject. I'll be talking about the subject related things at a later point in time. At this point in time, I'll be focusing more on what is the course structure, how this course is to be done, what are the various subjects in this particular course. These all things is what we're going to talk about today. You're not able to hear to what I'm saying. Is my voice clear for everyone now? I think at some places at your end there is an issue. Otherwise, everyone is able to hear. Okay. वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू होता है बीच बीच में, और इसीलिए हम लोग जितने भी लेक्चर्स लेते हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, एंड these recorded lectures are then uploaded on our e-learning app as well. So don't worry on that part. But it's always suggestible that you should be attending all the lectures live. क्योंकि लाइव लेक्चर अटेंड करने का जो मजा है ना, लाइव लेक्चर अटेंड करने में जो फील आता है और वो जो रूटीन बनता है, that always makes a lot of difference. And that's why it is suggested that you should always be attending the live lectures. That is why we take the lectures on live basis only. We are not taking any of the lectures as recorded ones. We'll share the recorded lectures, and by that way it will be more easier for you. No, nothing of that kind. Well, I completed my CA curriculum in the year 2003. Since 2002, in fact, I started teaching, and even today I'm into the same stream of teaching. I have taught in various colleges earlier, at the graduation level, at the undergraduation level, even at the post-graduation level. But now I'm completely focused on the commercial coaching, within which I take the classes at 11th, at 12th, at CA level. So that was the brief introduction of me. Let's try to have the introduction of our course. Let's try to talk about that what this course requires. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन, ओके, कैन यू रेज हैंड्स फॉर मी दैट हाउ मेनी ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द सीए कोर्स? कैन यू रेज हैंड्स फॉर मी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स? इज इट ओनली वन पर्सन हु हैज रजिस्टर्ड? No, there are so many. But only 8 or 10 people have registered.
So I'll be talking about how do you register for the CA course also. Yeah, lower your hands, no problem. I'll be talking about that how do you register for the CA course. और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को हम कैसे डील करने वाले हैं. It will hardly take a lecture or two within which we'll be able to finish these all discussion what we wanted to have. The very first that I'm going to talk about now for you all is the requirements of this course, the course curriculum as such. क्योंकि एक बार कोर्स करिकुलम हमारे दिमाग में बैठ जाए तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द स्टेप्स टू गो फॉरवर्ड, हाउ डू वी गो अहेड. These all things is what we're going to talk about. Let me just share my screen in here. Just a moment. There it is. In fact, this is the process in which I take my lectures. All through the lectures will happen in the same fashion. Okay. In fact, next point forward, you will be having the link of my lectures. It will not be the lectures like this, the interactive ones. Today, I wanted to see your faces also. थोड़ी देर के बाद में हम लोग आपस में मिलेंगे. For now, I'll just be coming forward with the requirements of this course, the whole course structure, the timeline. If I talk in your language, the timeline that we have to pass through, that is what we are going to talk about to start with. Like, see, currently you have completed your 12th in March of 2020, correct? Now you have registered for the course of CA Foundation, or you will be registering for that CA Foundation course, and your exam for CA Foundation is expected to be coming in May of 2021, correct? This will be your CA Foundation एग्जाम. जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब है वो सारे ये हैंडराइटिंग देख के खुश हो जाएंगे. ये हैंडराइटिंग से अगर ये मास्टर पास हो गया है तो मुझे पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, isn't it? How many of you have got the handwriting better than this, sorry, worse than this or equal to this? Can you raise hands? See what happens, I like to have my sessions to be more interactive. Whether I am teaching online, whether I am teaching in the class, I always like to have the session which is interactive enough. And that's why I'll keep asking you the questions. You have to keep responding. Equal to or less than that, this as the handwriting. There are some proud people raising their hands. Yeah, there are so many of them. Oh ho ho. गैलेक्सी A51 कौन है पता नहीं, रुतिका, कौस्तुभ, आईपैड कौन है पता नहीं, रेडमी, कहाँ से नाम रख लेते हो ये सारे तुम. Anyways, so there are 10 people who are having their handwriting. ये सारे बंदे खुश हो जाएंगे कि चलो यार मास्टर अगर इस हैंडराइटिंग में सीए पास हो गया है तो हमको तो कोई पास करने से रोक नहीं सकता है. That's good. That should be the confidence. Well, before I go ahead, that what is the sorry, May 21 CA Foundation exam. In this May 21 CA Foundation exam, you are supposed to appear for 4 papers.
you'll have 4 papers, but subjects are 6. Your first paper is the paper of accounts, which is for full 100 marks. Your next paper is of law, which is for 60 marks, and along with that there is a subject called as business correspondence and reporting, which is for 40 marks. Then you have the subject of maths. We call this as quantitative aptitude, which is for 100 marks. In this subject of maths, in fact, you have the composition of maths, stats, and logical reasoning. These are there for 40, 40, and 20 marks. Even though I am giving you the bifurcation on those subjects for the marking, just for the sake of understanding, I mentioned it. Otherwise, it's a 100-mark paper for you. Then there is a paper for economics, which is for 60 marks. And there is a subject called as business commercial knowledge, which is for 40 marks. अब इस क्लास में जो लोग बैठे हैं उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनको अचानक चिंता खाती है, यार मेरा अकाउंट्स तो आज तक के हुआ नहीं है, हाउ विल आई बी एबल टू कवर इट अप, विल इट बी पॉसिबल फॉर मी? कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, प्रेशर में आके किसी के कि भाई तू ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, एंड ऑल दैट, एंड स्टिल यू हैव joined this course without having the knowledge of the subject of accounts. Now, how will you cope up with that subject of accounts is a big question for you. So don't worry on that part. In fact, when I am going to talk about the CA foundation accounts, or even when I'll be talking about the accounts in the basic accounts, we are going to talk with the basis. We are going to talk about the absolute details of everything. So you won't be finding anything difficult in that. You'll be able to understand the things in very simpler manner. So don't worry on that part. And especially if you seriously have the kind of question, अगर आपने पहले accounts कहीं से भी नहीं किया है, तो I would suggest that you should go for that basic accounts batch, wherein you'll be able to cover up all the accounting concepts in detail. All right? क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो 11th 12th में जो आपका accounts miss out हो गया था basics वाला, वो 11th 12th basics वाला accounts I am going to cover in that particular batch, which will be approximately for 1 month. Along with this batch, that batch will continue. आपका initially science background वालों के लिए specifically कह रहा हूँ, जिनको accounts का बिल्कुल भी background नहीं है, जिनको accounts का debit credit भी नहीं समझ में आता है, they will be having the serious problem for next 10 or 15 days बस. उसके बाद you will start getting into the flow, you'll start getting into the kind of things, you'll start understanding the things in better way. So don't worry on that part. All right. Now, out of this, these first 2 papers, that is the paper of accounts and paper of law with BCR, these 2 papers are subjective papers. Subjective means what? You'll be required to write about these 2 papers like we write in our normal exams. जो हमने 11th 12th की exams लिखी थी, उसी तरह के papers हमारे पास for the subject of accounts and law BCR के भी रहने वाले हैं. मतलब ये हुआ कि हमको इसके इन 2 papers के लिए practice अच्छी करनी पड़ेगी in the form of understanding as well as in the form of writing. अब वो कैसे करना है वो हम लोग आगे चल के जैसे जैसे सब्जेक्ट में घुसेंगे वैसे वैसे हम लोग ये सब चीजें सीखते रहेंगे. I think I'm good with everyone with this multilingual kind of thing. Hindi, English mix, I'm going good for everyone. I can continue my lecture with 100% English also, there is no problem. But I believe that this is fine. थोड़ा सा monotony भी break होता है और थोड़ा comfort आ जाता है. Okay, fine, thank you. So the next 2 papers, that is the paper of maths and eco BCK, these papers are objective based papers. Objective means यहाँ पे आपके पास MCQs होंगे, whereas first 2 papers में आपके पास किसी भी तरह के MCQ नहीं होंगे, no objectives there. Those 2 papers will be 100% subjective papers. All right. In the current structure, you get for the subject of accounts and for the subject of law BCR combined together, you get 3 hours for writing plus 15 minutes reading time. आप जब पेपर लिखने बैठते हो
नॉर्मली अब तक जब भी आपने पेपर दिए हैं, आपकी जितनी भी एग्जाम्स थी, उन सारी एग्जाम्स में अब तक जितने भी आप एग्जाम्स लिखा करते थे, उसमें आपको पहले आंसर शीट दिया करते थे। उस आंसर शीट में आप अपना नाम, गांव, पत्ता, रोल नंबर वगैरह जो कुछ भी है वो सब भर लिया करते थे। और उसके बाद आता हूं मंगेश, तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा बेटा। मैं खत्म कर लूं, उसके बाद कोई जवाब सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछते रहिए। आई डोंट माइंड योर क्वेश्चंस एट ऑल, बट द ओनली थिंग इज दैट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड देन यू आस्क द क्वेश्चन। क्योंकि तू जो सवाल पूछ रहा है बेटा, इसका जवाब मेरे पास ऑलरेडी है, और जब मैं उस पॉइंट पे आऊंगा तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज। I was talking about that first two papers which are subjective papers. For each paper 100 मार्क का जो पेपर होगा आपका, उसके लिए आपको 3 घंटे पेपर के लिखने के लिए और 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा। आई वाज सेइंग कि अब तक आपको पहले आंसर शीट्स दिया करते थे, उसको आप पूरा समझ लेते, उसको आप भर लेते थे, फिर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, फिर आप पेपर लिखना चालू करते थे। In the CA exams, for the first two papers of your CA foundation, you first get the question paper to read. आपके हाथ में पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, यू रीड दैट क्वेश्चन पेपर, समझ लो, और उसके बाद डिसाइड करो भाई बैठना है या जाना है। बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट सीए एग्जाम, यू नो। मैंने ऐसा क्यों कहा, ये कई बार क्या होता है ना, व्हेन यू गो एट सीए इंटरमीडिएट लेवल, सीए फाइनल लेवल, बंदे बड़े फर्म होते हैं अपने दिमाग से, बड़े डिसाइडेड होते हैं। वो जैसे क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं समझ में आता है, वैसे भी तो अगले अटेम्प्ट में आना है, चल ठीक है रहने दे, अब अगले अटेम्प्ट में लिखेंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस, whereas that's not good। पर इसलिए वो 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम दिया जाता है, ऐसा नहीं है। that 15 minutes reading time is to decide that which question you want to start with, ताकि आप पहले, क्योंकि अब तक के क्या कहा जाता था, आईसीआई के अगेंस्ट बहुत सारे कंप्लेंट्स गए कि आप बहुत ही लेंथी पेपर निकालते हो, लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने में ही घंटा निकल जाता है, एंड दैट्स व्हाई द आईसीआई स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस ऑफ गिविंग यू द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, आपको समझ में आता है कि कौन से टॉपिक्स हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं, कहां से स्टार्ट करना है। फॉर दैट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इज गिवन, और एक बार वो 15 मिनट हो जाए फिर आपको आंसर शीट दी जाती है, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग योर पेपर फ्रॉम द पॉइंट 1, राइट। Whereas the next two papers, that is the objective papers, here you get only 2 hours each paper. For the paper of maths, 100 MCQs will be there, one question, 4 options, select the correct option and you go ahead. Economics, BCK, the same thing, right? अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स हैं, इसमें अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो यू गेट +1 फॉर दैट। इफ यू गिव द रॉन्ग आंसर यू गेट -0.25 फॉर दैट। बट इफ यू हैव केप्ट द ब्लैंक आंसर, आपने ना करेक्ट आंसर दिया ना रॉन्ग आंसर दिया, वो गोले को आपने ब्लैंक छोड़ दिया, देन इन दैट केस यू डोंट गेट एनी मार्क फॉर दैट, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट एज वेल। तो अगर आपने आंसर सॉल्व किया है, ओनली इफ यू हैव सिलेक्टेड द ऑप्शन, देन एंड ओनली देन देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग, अदरवाइज नॉट। एम आई राइट? नाउ एज पर द करंट क्राइटेरिया ऑफ आईसीएआई, पासिंग क्राइटेरिया की अगर बात करें तो passing criteria is 40% per paper. You should get minimum 40% per paper. I repeat my words when it is important. I said per paper. I'm not using the term as per subject. मतलब 100 में से मिनिमम आपको 40 चाहिए होंगे। यहां लॉ और बीसीके के कंबाइन मिला के आपको 40% मिनिमम चाहिए होंगे, ना कि लॉ में 24, बीसीआर में 16, इनके इंडिविजुअल मार्क्स की आवश्यकता नहीं है आपको, इन दोनों का कंबाइंड टोटल 40% होना चाहिए मिनिमम। Alright, but this is not the only criteria, and 50% in aggregate. This is very unique kind of criteria for passing which you must not have seen till date. आज तक हमको सिर्फ सब्जेक्ट में पास करना इंपॉर्टेंट होता था, हम लोग पेपर में पास हो रहे हैं या नहीं, टोटल में हम लोग को पासिंग का चेकिंग नहीं होता था, बट यहाँ पे आपको टोटल में भी पास होना पड़ेगा।
मतलब ये, ऑब्जर्व इट विद द एग्जांपल, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. These are the 4 papers that you have. All right. Now, each subject you should be getting minimum 40, 40, 40, 40, and the total of that should not be 160. The total of that should be minimum 200. All right. मतलब ये, suppose a student is getting paper 1 45, paper 2 45, paper 3 45, perfectionist बंदा है कि सारे पेपर्स में एक जैसे मार्क्स लेके आएगा, and the total of that goes to 180. इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो बंदा हर सब्जेक्ट में पास है, but in the total the person has got 180 marks. This is not fulfilling the criteria, and therefore the student will be declared as fail. And the moment you are declared as fail, you are doing a course called as CA. The full form of that is come again. If you are not able to pass in that exam, you will be required to come again and come again for all the subjects. You will be required to give the papers of all subjects once again. That will be the kind of criteria. Suppose you get say 55 marks in the subject 1, 45 marks in the subject 2, 55 marks in the subject 3, 45 marks in the subject 4. The total of that comes to 200, isn't it? Individually, if you check out 55 above 40, above 40, above 40, above 40, so the student will be declared as pass. Am I right? I hope I'm doing good for everyone. क्या आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं? Can you raise hands for me? You keep your hands up. हाँ, अदरवाइज क्या होगा ना, मैं यहाँ पे प्रवचन किए जा रहा हूँ और आप लोग एकदम ऐसे मंत्र मुग्ध हो के वाह क्या बात है, क्या बात कर रहा है यार बंदा, सही है यार, यही सुनना था हमको, isn't it? Well, nothing of that kind. Lower your hands now. Now suppose the criteria is the student has got say 39, 61, 45 and 80 marks. Right? मतलब ये कि भाई साहब को 100, 180, 225 मार्क्स मिल गए, टोटल में above 200. Individual pass, 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 fail. The student will be declared as fail, and the moment the student is declared as fail, अगले अटेम्प्ट में सिर्फ अकाउंट्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा, अगले अटेम्प्ट में उस स्टूडेंट को चारों पेपर वापस देने होंगे. That is the criteria, that you are not supposed to pass only in aggregate, but you are supposed to pass in the individual paper also. क्योंकि इंडिविजुअल पेपर में पास नहीं हुए, चाहे आपने कितने भी झंडे गाड़ लिए इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड बीसीके, बीसीआर, बट अकाउंट्स में आप झंडे नहीं गाड़ पाए, तो इसलिए आपको अपनी बाउंड्री के अंदर वापस जाना पड़ेगा, आपको वापस से खेलना पड़ेगा. वो ऐसा है कि भले टीम के किसी प्लेयर ने सेंचुरी बना ली, पर जब तक टीम वो टारगेट स्कोर तक के अचीव नहीं कर पाती है, तब तक उस सेंचुरी की कोई वैल्यू नहीं है. Am I right? Now, so this is the passing criteria for the CA Foundation. I said there are total 6 subjects, but papers will be 4. Accounts, मैथ्स, इन 2 सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस अच्छी चाहिए होती है. लॉ, बीसीआर के लिए राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ती है. इकोनॉमिक्स और बीसीके में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चाहिए. When you are able to do this, when you are able to cover up this, you will not be having any kind of problem. All right? आज तो हमारी कहानी शुरू हुई है.
हम लोग अगले मई तक के साथ में हैं, मई 2021 तक। तो बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको, in which way you can cover up these all things, in what way you should be studying, what should be the methodology of studying, हमने टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। But for now we'll be focusing only on the timeline. तो I think foundation का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया सबके लिए, am I right? मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कितना समय मिलता है पर पेपर। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर की क्या सिचुएशन होती है। कई बार बंदे पूछते हैं, सर अकाउंट्स और लॉ जैसे पेपर में भी निगेटिव मार्किंग होता है। भाई वहां पे अगर आपने सही आंसर लिख दिया, सही प्रेजेंटेशन के साथ आंसर लिखा, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ निगेटिव मार्किंग। गलत लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सही लिखोगे तो उसके मार्क्स जिस तरह से तुमने उसको प्रेजेंट किया है उसके हिसाब से मिलेंगे। So there is no concept of negative marking, but your presentation makes a lot of difference when it comes to writing the paper of law and the paper of accounts. अब मई 2021 में जो आपने सीए फाउंडेशन एग्जाम लिखी, राइट, इसका जो रिजल्ट है ये आने वाला है जुलाई 2021 में। The result will come for the CA foundation exam. I assume that you have passed it. You have cleared individually, you have cleared in aggregate. तो इसके बाद स्टार्ट होता है आपका CA इंटरमीडिएट का सफर। The next level is what? CA intermediate. CA intermediate will come for you in May of 2022. Assuming you have passed in July of 2021, correct? अब CA intermediate जो कोर्स है, again it is a course which is a distance learning course. आपको इस समय तक के भी कोई कॉलेज में नहीं जाना होता है, कोई ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। The study of intermediate is divided into two groups, group 1 and group 2. Each group contains 4 subjects, 4 papers in fact, not subjects. ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, राइट। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये जो मई 2021 की एग्जाम आएगी, इसमें क्या मैंने सिर्फ ग्रुप 1 की एग्जाम लिखनी है, क्या मैंने सिर्फ ग्रुप 2 की एग्जाम लिखनी है, या फिर दोनों एक साथ लिखने हैं। Now this is all dependent on one's own decision and wisdom. It's not the criteria. There is no compulsion from the Institute of Chartered Accountants of India. The Institute of Chartered Accountants of India give you the option of giving either group 1 or group 2 or both groups together. ये आप खुद तय कर सकते हो कि आपको दोनों ग्रुप देने हैं या कोई एक ग्रुप देना है। पहले क्राइटेरिया हुआ करता था कि आपको ग्रुप 1 पहले पास करना ही पड़ेगा, बट नाउ दैट क्राइटेरिया इज गॉन। आप दोनों में से कोई एक ग्रुप में भी एग्जाम लिख के आगे बढ़ सकते हो। वी जनरली सजेस्ट दैट वन शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, क्योंकि उसके फायदे बहुत हैं। इवन एट सीए इंटरमीडिएट लेवल द पासिंग क्राइटेरिया रिमेन्स सेम। अब सीए इंटरमीडिएट पे एक बात बता दूं आपको कि हर सब्जेक्ट, टोटल 8 में से 6 पेपर्स ऐसे हैं जिसमें 70% ऑफ द पेपर इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, एंड 30% ऑफ द पेपर इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड पेपर। ये सीए इंटरमीडिएट में होता है, सीए फाउंडेशन में नहीं। मैंने क्या कहा? आउट ऑफ टोटल 8, 6 papers are such where 70% of the paper is subjective paper and 30% of the paper is objective based paper, MCQ based paper. पर वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। MCQ based पेपर होने के बावजूद भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। वहां भी सीए इंटरमीडिएट में भी पासिंग का जो क्राइटेरिया होता है, that is again individual subject wise you should be passing with 40% and aggregate should be 50%. अब मान लो आपने
फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब मैं 2022 की एग्जाम में ओनली ग्रुप 1 का एग्जाम लिखा, तो होगा क्या, आपका वो जो पासिंग क्राइटेरिया है वो सिर्फ ग्रुप 1 को अप्लाई होगा। फिर आपने नवंबर 2022 में ग्रुप 2 का एग्जाम लिखा, तो वो जो पासिंग क्राइटेरिया है वो सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अप्लाई होगा। पर अगर आपने दोनों ग्रुप्स एक साथ दे दिए तो पासिंग क्राइटेरिया इंडिविजुअल ग्रुप वाइज अप्लाई नहीं होता है। द पासिंग क्राइटेरिया विल अप्लाई फॉर बोथ ग्रुप्स टुगेदर। मतलब कैसे? सपोज इन May 22 you give group 1 ka exam and you score 220 marks, so you'll be declared as pass. And in November of 2022, because ICAI's exams are conducted twice in every year, so November 22 में आपने group 2 का परीक्षा दिया और and in that exam you get say 195 marks. For group 2 you will be declared as fail. You will be required to appear for group 2 again in May of 2023. All right? पर अगर किसी व्यक्ति ने मई 2020 में ही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों की एग्जाम लिखी और ग्रुप 1 में 220 मार्क, अज्यूमिंग इंडिविजुअली ऑल सब्जेक्ट में पास हो गया, total of this is 415, the student will be declared as pass in both the groups. Pass in both the groups, not only in group 1 but pass in both groups. ये उसका फायदा होता है when the student appears for both groups at the same time. That's where the difference comes. That's what is required, that when you are appearing for the CA intermediate exam, we generally suggest that one should go for both the groups. एक तो ये क्राइटेरिया कि इसकी वजह से आप पास हो सकते हो बोथ ग्रुप्स में एक साथ, इसे हम लोग सेट ऑफ कहते हैं, कि एक ग्रुप के एक्सेस मार्क्स दूसरे ग्रुप के शॉर्टफॉल में एडजस्ट हो जाते हैं, प्रिज्यूमिंग दैट इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट में आप पास हो। Whereas अगर आपने एक एक ग्रुप करके एग्जाम लिखी तो ये सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता है। That's point number 1. And point number 2, कोई एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है, कोई मेरे से बहुत अच्छा एकदम खतरनाक कंचा स्टूडेंट होता है जिसको सारी चीजें बहुत अच्छे तरह से पता होती है, and he can score very big numbers. Suppose वो 800 में से 650 700 मार्क्स ला सकता है, तो ICAI has a system of declaring the merit. टॉप 50 जो स्कोर होते हैं उनको मेरिट रैंक डिक्लेयर होता है। तो ये टॉप 50 में अगर आपको मेरिट रैंक करके डिक्लेयर होना है तो उसके लिए भी आपको बोथ ग्रुप एक साथ देना अनिवार्य होता है। हालांकि अगर आप एक एक ग्रुप करके भी पास करते हो तो यू कैन स्टिल गो अहेड, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट लेवल ऑफ सीए कोर्स। अगर आप एक ग्रुप भी पास हो गए हो तो भी आपका अगला लेवल स्टार्ट हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। Am I clear? Yes or no? So, the May 2022 का एग्जाम का रिजल्ट will come in July of 2022. The CA intermediate का रिजल्ट, assuming you have passed either group 1 or group 2 or both groups, you can start with your articleship, which is for a period of 3 years. This is what we call as articles or articleship. This articleship is for a period of 3 years. Now, what is this articleship? Articleship is basically working under a chartered accountant or a chartered accountant firm to have a practical knowledge. This is the beauty of the CA course, I would say. This will end in July of 2025. July 22 से 23, 24, 25 3 साल के लिए आर्टिकलशिप होती है। Why I was mentioning कि this is the beauty. In these 3 years, you are dealing with the real life situation directly. And when you start dealing with the real life situation directly, you start having the feel of it on a continuous basis. And that's why we generally suggest that one should go for the articleship with the good firms. You should learn the practical aspects. मैं आज आपके सामने जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात करने की हिम्मत रख रहा हूं, the very basic reason behind that was my articleship.
During my articleship, I have dealt with n number of people. I have dealt with a different variety of people. I have talked to the people. I have understood the feelings of them. I have understood what is the requirement of them. And that is what has given me the confidence. So that's why it is always suggested, or it is always said, that this is one of the best part of the CA course. People say articleship में बहुत पीसते हैं, रगड़ते हैं, but रगड़े जाओगे, पीसे जाओगे, तब न जाके सीखोगे. And that's why you need to do the articleship, right? Now, in the last 6 months, as per the current provisions of the ICAI, in the last 6 months of your articleship, whichever exam for CA comes, you can appear for that. So in this case, the last 6 months, you'll have the exam in May of 2025 of CA final. Now, CA final again is divided into two groups. Group 1, I'm not going into the detail of that group 1, group 2, what are the subjects. Here also the passing criteria remains same. That is what? 40% in the individual paper and 50% in aggregate. Am I right? And the result of this CA final exam will come in July of 2025. So in July of 2025, you can complete your CA course. This is how that whole structure works. Now, a very simple thing that I would be interested to highlight here, very interesting one. CA final का जो syllabus अभी चल रहा है, CA final पे ICAI ने course को, groups को, sorry, the total subjects have been divided into two parts: group 1, group 2. Group 1 contains 4, group 2 contains 4 papers. But group 2 में there is a selective paper available. Selective means what? You can select out of the given options. There are 7 different subjects which the ICAI proposes to you. Out of that, you elect one and you can appear for that respective paper only. And on top of that, the exam for that selective or elective paper is conducted on open book basis. It is called as open book test. Now, what is this open book test? It is the test which is conducted having the resources available with you. आपके हाथ में मटेरियल होता है और आप खुद उसमें से सिलेक्ट करके, चूज करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो आंसर्स. That's there in the CA final exam. हालांकि बंदों को वो पसंद नहीं आता है कि ओपन बुक, इससे अच्छा पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, तो ज्यादा इजीली हम लोग पेपर सॉल्व कर सकते हैं. Whichever way, that option is available. All right. So this is about the course curriculum of the CA, starting from the childhood, that is CA foundation, to the younger age, that is CA intermediate, से बुढ़ापा, that is CA final. तो आपको बुजुर्ग बनके ही यहाँ से निकलना है. You should be able to finish this course if you are dedicated enough. If you have the target in your mind, if you are having the kind of focus in your mind, no, I am going to crack this, then you won't be having any kind of problem. You won't be having any kind of difficulty. You will surely be able to achieve the things. दिक्कत कहाँ होती है पता है? You start looking at the syllabus. You start seeing one of the point and you start understanding, यार ये तो मेरे भेजे में नहीं घुस रहा है, इसको मैं मेरे भेजे में कैसे भेजूं? And then you start getting distracted, diverted, and that is what you are supposed to avoid. कि जब आपको कोई पर्टिकुलर एक कंसेप्ट नहीं समझ आ रही है, इसका मतलब उस कंसेप्ट को समझना है. मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आती है, इसका मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है. Isn't it? So try to focus on the things, try to be more dedicated, and this will surely be a wonderful journey for us. Now I'll talk about what we will be doing at Ekatvam for you. As far as the notes are concerned, for each subject, we have prepared our synopsis, our notes already. If you are not in Pune, those notes will be dispatched to you through the courier. If you are within Pune city, then in that case, those notes will be told to you to pick up from the office. Now, these notes will be available from us. At the same time,
You will be getting certain books from the Institute of Chartered Accountants of India. We call that as ICAI. तो जब आप ICAI के साथ रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ये सारी प्रोसेस मैं आपको कल बताने वाला हूं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपको। तो जब आप ICAI के साथ रजिस्टर कर लोगे, you have to pay a fee of 9,200 to them. Once you do that registration, after that, after some days, you'll be getting a link through which you can order your books. And once you supply the books, sorry, once you order the books, they'll be supplying you the books. Those will be coming through the courier. These books, we call that as ICAI module. So you've got two major resources for your studies. One is the ICAI module. Second is the ECATCOM notes. And the third major resource is these classes. ये तीन रिसोर्सेस आपके प्रिपरेशन ऑफ सीए फाउंडेशन के लिए सफिशिएंट हैं, क्योंकि हम लोग जब आपको पढ़ाने वाले हैं, हम लोग जब आपको आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, तो विल बी शेयरिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स, एंड एट द सेम टाइम after a period of say 15 days or a month, we'll start conducting the tests on every Sunday. And when you start solving those tests, you'll start having the feel of what this course is all about, how to tackle with the situations, how to tackle with the problems. ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आना चालू हो जाएगी. So this is how we are going to help you out. Now, who all are going to help you out? I'll just put forth all the names of them. You have already met Sucharit Rajadhyaksha sir. He's dealing with the subject of economics for you. He'll be talking about the subject of economics. Professor S.M. Joshi, I've already met with him. He'll be talking about the subject of law. Some part, the business laws, the Indian Contract Act, Sale of Goods Act, and Partnership Act will be talked about by him. Then the company law part will be dealt with by CA Abhishek Jhavre. I'll be taking the subject of accounts, of course, with the core concepts. We at ECATCOM have always been interested to focus only on one thing, and that is core concepts. क्योंकि मेरे अगर कंसेप्ट अच्छे हैं, मुझे अगर समझ आ गया कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है. Abbas, I'll come to your answer. Just a moment. मैंने क्या करना है, किस तरह से एग्जाम्स लिखनी है, या मेरे सामने किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा है तो मैं कोई भी क्वेश्चन किसी भी समय पे किसी भी सिचुएशन में टैकल कर सकता हूं. We don't have the concept of ratta maro technique. We don't like that. Then for the subject of accounts, some part of the syllabus will be tackled by me and some part of the syllabus will be tackled by CA Abhishek Jhavre. So he shares two subjects. One is with S.M. Joshi and one is with me. Then you'll be meeting one of the jolly personality in ECATCOM, the most youngest personality of ECATCOM by heart, Professor G.B. Joshi, Girish B. Joshi. He'll be dealing with the subject of mathematics, statistics, and logical reasoning. When you'll start attending his lectures, you'll be able to know, or you'll be able to understand why I'm talking about like that, because even I have been his student, I know how he deals with the students, how he talks about in the class. मैथ्स को इतना सिंपल सब्जेक्ट बनाने की कला मैंने आज तक किसी और व्यक्ति में नहीं देखी है. यू आर गोइंग टू मीट हिम. प्रोफेसर जीबी जोशी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. देन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बीसीआर, द बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, वी हैव अ पीएचडी डॉक्टरेट फॉर इट, एंड दैट इज डॉक्टर दिशा राजाध्यक्ष. She is wife of Sucharit sir, and she is going to talk about the subject of business correspondence and reporting. Meticulously she tries to explain everything which is required. हम लोग बड़े lightly लेते हैं subject को, but that is very interesting and important subject. Why? Because it carries good marks, 40 marks, you know. And then the youngest amongst all of us, by heart, by age, is Rishabh Jain, CA Rishabh Jain. He'll be dealing with you for the subject of business commercial knowledge, one of the fantastic subject, and we have got the best faculty for it. A person who has got the exposure to the large companies, who has seen through many of the transactions, financial transactions personally. So he'll be talking about the concept of business commercial knowledge.
So this is the whole range of faculty for you. We are there with you all in and out every time. As far as I am concerned, you can just write down my number. If you have got any kind of queries, doubts, difficulties, you can deal with, I can deal with those very comfortably. There is no problem. My number is 9422918901. Abbas has got a question. Sir, is there any exam between CA intermediate and CA final? Abbas, in fact, for joining the articleship, you are supposed to do a course called as AICTSS. That is Information Technology and Communication course. When you do that IT and communication course, after that they conduct an examination. This is the course which has got the best percentages of CA curriculum. इसके अलावा कोई भी और चाहे सीए फाउंडेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे फाइनल हो, इन पे कहीं पे भी कोई अच्छा परसेंटेज का रिजल्ट नहीं आता है. यहाँ 99.5% स्टूडेंट्स पास. वहां भी कैसे आधा % लोग फेल हो जाते हैं मुझे पता नहीं, बट the best passing percentage that the ICI can declare is only at the AICTSS course. All right. So that will be, that's a kind of formality. You have to do that course for around 15 to 20 days, and within that 15 to 20 days you get to know the information technology. Tally सिखाते हैं उसमें, तो आपको अलग से tally का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है. Excel कैसे यूज करना चाहिए, Microsoft Excel, Microsoft Word, इन सब चीजों को from the office perspective, आपको एक ऑफिस का पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि जब आप ऑफिस में आर्टिकलशिप के लिए जाओगे तो उस समय पे आपने कैसे बिहेव करना चाहिए, बॉस के साथ कैसे बात करना चाहिए. These all things are dealt with at that particular course. That's why that communication course is very much important. So you have to deal with that after your CA intermediate, before your articleship starts. And when you go into your CA final exam, उसके पहले वापस से एक एडवांस कोर्स करना, AICTSS एडवांस, वो एडवांस कोर्स करना होता है. And it's a similar one as we have talked about the AICTSS basic. All right. These are the two courses which are conducted exclusively by ICI in their respective branches only. The no faculty, no outsider can conduct it. Certificate will also be given by the ICAI for that. All right. Yes. If you people have any kind of questions, you can just raise those. I'll just put everyone on the platform now. You can switch on your videos also so that I'll be able to see your faces. If we give group 1 and group 2 in May 22 and pass only in group 1, then I have to give group 1 and no, in that case you'll be required to give only one group, the other group remaining. Is the exam time sufficient for CA foundation exam according to you? More than sufficient. ज़्यादा ही समय देते हैं, कम नहीं देते हैं. So don't worry on that part. Yes, if anyone else has any kind of question. I hope the interaction that we have had today was informative for every one of you. We'll surely be having the more better interactions. Maths for non-math students. In fact, when GB sir starts talking about mathematics as a subject, he starts talking from the very basics of it. And he conducts the additional lectures for basics also. He'll be informing you about that when he starts the sessions. His sessions, in fact, will be starting from next Monday, not this week. As far as your timetable for tomorrow onwards up till this week end is concerned, that I'll be giving you separately. It will be coming on the group, so don't worry on that part. And you need not worry about, we'll keep on giving you the information well in advance, in the comfortable time. Which articleship are good? One means firm articleship or industrial. It is always firm's articleship, no doubt about it. Is the gap between BCom exams and CA foundation sufficient? BCom, we don't worry about it because BCom is BCom. So let's better not to talk about that. Otherwise, मतलब जबरदस्ती किसी चीज की इज्जत उछालना मुझे अच्छा नहीं लगता है. BCom, why we are worrying about it? Don't worry. Rakshita, you have a question? You have raised hand. Which is good score out of 400 in foundation? We'll talk about that later better. Sir, I have already purchased foundation books. Oh, why did you purchase the foundation books? फ्री में आते हैं बेटा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो उसके बाद में आते हैं. और रजिस्ट्रेशन के बगैर you cannot give the exam. You have to first register only.
how many hours do we need to give in a day for accounts? Rafsana, I'll be talking about these kind of things. You need to wait. अच्छा, हमारे इंडिया से बाहर के कोई बच्चे हैं इसमें, और all are from India only? Anyone who is from outside India? Generally होते हैं हमारे पास. I have completed commerce crash course till balance sheet. Is this enough? Yes, of course, Shruti, that is sufficient. What you have completed is sufficient. That will be quite enough when will we start. You will start understanding the things from day one. Basic account batch I'll be starting from Friday. I had earlier committed as Wednesday or Thursday I was supposed to start, but I'll be starting it from Friday. Rakshita, if you have completed registration, there is no problem. You'll be getting the modules. Don't worry on that part. Registration कैसे करना है, कहाँ करना है, मॉड्यूल कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको अगले सेशन बताऊंगा. जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया वो बहुत बढ़िया बात है. It will hardly take 15-20 minutes. I'll be able to complete that particular task. All right. So that is it from me for today. I hope you enjoyed it. We'll be meeting tomorrow and we'll start talking about the registration and the subject. So we'll meet tomorrow. Thank you. Thank you, everyone.